नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल। खबरों की शुरुआत करें, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। भारत और चिली के बीच एंटार्क्टिका में सहयोग बढ़ाने, सांस्कृतिक आदान प्रदान, आपदा प्रबंधन सहित 4 क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर समझौते का हुआ आदान प्रदान। दोनों देश ने क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाने पर दिया जोर। लोकसभा में कल 12 बजे रखा जाएगा वक्फ संशोधन बिल। बिल पर 8 घंटे होगी चर्चा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक से विपक्षी सदस्यों ने किया वॉकआउट। भाजपा ने लोकसभा में अपने सभी सदस्यों को उपस्थित रहने के लिए व्हिप किया जारी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में कहा, भाजपा और एनडीए के डीएनए में है किसान कल्याण। किसानों के बोझ को कम करने के लिए सब्सिडी उपलब्ध करा रही है मोदी सरकार। आरबीआई की स्थापना के 90 वर्ष हुए पूरे। विशेष समारोह में हुई शामिल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। कहा, भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में रिजर्व बैंक की भूमिका अहम। गुजरात के बनासकांठा में पटाखा फैक्ट्री में लगी भीषण आग। 18 की मौत, कई घायल मजदूरों को अलग अलग अस्पतालों में किया गया भर्ती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिस फॉन्ट की मौजूदगी में प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई। इस दौरान आपसी हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर बातचीत हुई। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं इस समय विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। Our ambassador in Chile, Srimati Abhilasha Joshi, and we have with us the Joint Secretary who looks after Latin America and the Caribbean region, Shri Praful Chandra Sharma. With that, I invite Secretary Sir to give his opening remarks. Sir, the floor is yours. Thank you, Ranveer. Good afternoon, dear friends. As you are aware, at the invitation of Prime Minister Narendra Modi, the President of the Republic of Chile, His Excellency Gabriel Boric Font, is on a state visit to India from 1st to 6th April 2025. He arrived on 1st April, which is today, and will be departing on 6th of April after an extensive program in Delhi, Mumbai and Bengaluru. The President is accompanied by a high-powered delegation of cabinet ministers, parliamentarians, senior officials and a large business delegation. This is President Boric's first state visit to India, although 2 Chilean presidents have visited India in the past. Prior to this, President Boric had met our Prime Minister in Brazil on the margins of the G20 summit in November 2024 in Rio. As you might know, India and Chile share warm and friendly relations. Chile was among the first countries to recognize India's independence. Since then, bilateral relations have strengthened across a number of sectors. Our 2 countries have commonality of views on a wide range of issues. We cooperate extensively in multilateral fora and share similar views on expansion and reform of the United Nations Security Council. Chile has been consistent in its support to India's claim to a permanent seat in the UNSC. We recently commemorated 75 years of establishment of diplomatic relations. Indian culture and traditions are very popular in Chile. There are a number of yoga and Ayurveda schools and yoga practitioners in Chile. You would be happy to know that Chile has its own National Yoga Day, which is celebrated on 4th of November. Ayurveda is also gaining popularity, as I just noted, and there are a few Ayurveda institutes, clinics in Chile,
with close ties to some Indian Ayurveda institutes. There is also growing interest in Indian classical dances, cuisine, films, and tourism. Coming back to the visit, as I said, the President of Chile arrived in New Delhi earlier today. He was warmly received by Shri Pavitra Margarita, Minister of State for External Affairs, and was accorded a ceremonial welcome at the airport. His first engagement of the day was a call-on by the External Affairs Minister, Dr. S. Jaishankar. This was followed by extensive bilateral discussions with our Prime Minister and delegation. The two leaders undertook a comprehensive review of the entire gamut of bilateral relations, spanning a wide range of sectors including trade and investment, health and pharmaceuticals, mining and mineral resources, defense and security, agriculture and food security, green energy, ICT, digital economy, innovation, and disaster management. The President expressed keen interest in developing cooperation in technology, innovation, cultural exchanges, and academic collaboration. You will see a lot of the areas of convergence and the discussion that the two leaders had in the joint statement that is being issued. The two leaders also witnessed the exchange of several bilateral documents and MOUs. The joint statement lists that out. These include the letter of intent on Antarctica cooperation, cultural exchange program for the period 2025 to 29, agreement on cooperation and mutual assistance in customs matters, MOU for cooperation in the disability sector, MOU on police cooperation against organized crime, cybercrime and combating corruption, MOU on disaster management, and renewal of the amended MOU in the field of geology and mineral resources. After this, there were press statements by the two leaders. Prime Minister then hosted a lunch in honor of the visiting President. As is customary in a state visit, President Boric visited Rajghat and laid a wreath at the Samadhi of Mahatma Gandhi. He will meet Honorable Rashtrapati Ji in the evening, followed by a banquet dinner hosted by the Honorable Rashtrapati Ji in honor of the visiting President and his delegation. As I said, the President is accompanied by a large business delegation with him. Obviously, we expect many business interactions with Indian industry leaders. In fact, business events have been planned in Delhi, Mumbai and Bengaluru on 2nd, 3rd and 5th April respectively. While in Delhi, the ministers accompanying the President will have over 25 meetings with Indian ministers and business counterparts. The MPs in the President's delegation will visit our parliament and interact with the parliamentarians. President Boric is expected to have official meetings in Mumbai, where the Chief Minister of Maharashtra is likely to pay a courtesy call on the visiting dignitary. There will also be a meeting with the Honorable Governor of Maharashtra. In Bengaluru, President Boric will meet the Governor of Karnataka and the Chief Minister of Karnataka. President Boric is keen to attract Indian investments into Chile. There are several opportunities for Indian businesses in the areas of ports, airports, mining, railway infrastructure, renewable energy, and a number of other projects. Technology cooperation is also high on the agenda. President Boric expressed keen interest in collaboration and exchanges in the areas of education, culture, arts and cinema, Ayurveda and yoga. Chile, as you know, is an important partner for India in the Latin American region. We have complementary trade and economic relations with Chile. While we supply pharmaceutical products, engineering goods, automobiles and chemicals, we import a lot of critical mineral resources from Chile, which are important ingredients for our industrial development. Chile is the largest producer of copper in the world. It also has substantial reserves of lithium and other minerals. There is interest on both sides to further strengthen this relationship. Let me give you a couple of sentences on the Indian community in Chile. The origins of the Indian community in Chile can be traced back to 1905.
Currently, it is estimated that there are about 4,000 overseas Indians, about 1850 NRIs, and about a little over 2,000 PIOs living in Chile. The majority are from the Sindhi community, who are mainly engaged in business and have integrated well into Chilean society. 1/3 of them live in Iquique, and the rest are in Santiago, Valparaiso, Vina del Mar, and Punta Arenas. In addition, there is a constant flow of professionals and businessmen from India working mainly in the ICT and financial services sectors. Some Indian labor is also present in Chile, working mainly in Indian restaurants and shops. I will stop now, and I'm open to any questions that you might have. Thank you very much. Okay. So first we'll go with Huma. Sir, I'm Huma Siddiqui. So I have two questions. Was there any discussion on the expansion of the trade agreement that India has with Chile? And my second question is, you mentioned that they are talking about defense and security. So what exactly was discussed in that sector, if you can highlight that? Andres? Thank you. Andres Kipani, Financial Times. As a Latin American myself, I'm quite interested in this visit. Just to stress, if you can deepen on a point that you made, there seems to be a further outreach of India into Latin America. You opened more embassies recently. Minister Margarita de Raicina Dialogue gave a speech solely on Latin America with quite a lot of stress on critical minerals. India signed an agreement with Argentina last year. You just opened an embassy in Bolivia, which holds the largest lithium reserves in the world, and now you have Chile's president here, whose country is part of the lithium triangle. How much is this visit about securing lithium and critical minerals for India's energy transition? Thank you. Okay. Sahil? Sir, I'm Sahil Pandey from ENI. Any update regarding or any development regarding Chile-India FTA, if there is a possibility? Okay. Sir, we can take these three? Yeah, sure. First, let's take these three and then we'll come back for more. Thank you very much. Let me start with the FTA and CEPA. We already have a partial trade agreement with Chile, which addresses about 2,000 lines on the Chilean side and about 1,000 lines. There are concessional duties agreed on both sides. The idea is to try and expand that into a more comprehensive FTA or a comprehensive economic partnership agreement that will also include, in addition to trade in goods, services, and investment. And therefore, all three parts of a comprehensive economic agreement will be addressed. We just agreed, in the run-up to the visit on the terms of reference of the discussions towards CEPA. And that will set the tone for the detailed discussions that will be held. Obviously, both sides try to find a balance on how to secure their interests. Our interests obviously include expanding our agricultural exports, securing critical minerals, and on the Chilean side, naturally, the interest is on exporting some of their agricultural products that are not necessarily available in our market, that Chile is good at producing. And there is also an interest on the Chilean side to try and diversify their trade partners to include other large emerging economies. India naturally offers itself as a very attractive option for this purpose. So therefore, the Chilean side has serious interest in working with us on a fairly comprehensive CEPA that includes concessional duties on a number of lines. Our interest also on the Indian side includes opening up the services market in our partner countries. So that will also be an area of interest for Chile. And naturally, technology, all kinds of other business services will be areas of interest for us. Plus, both sides are interested in attracting investment. Chile wants more investments in mining, agro processing, renewable energy, etc. We naturally
as part of our Atmanirbhar Bharat initiative, want investment in a number of areas that help us develop industrial capacities and help us become a manufacturing hub. So broadly, those are the areas that we'll target. We'll try naturally for both sides to strike a balance that is mutually beneficial. Your second question was about defense and security. We are a country where the defense industrial capacity is continuously increasing. We are securing technology from various partner countries. We are also developing our own technologies. So therefore, we do have an interest in expanding our defense exports. On the other hand, Chile lives in a peaceful regional neighborhood. Their defense requirements are very different from ours. But Chile has a deep interest in the defense industrial sector because it believes that it incubates a number of interesting critical technologies that can be used for other applications, including in civilian sectors. It is an area that interests us, and therefore it offers opportunities for us to co-develop technologies and find ways to benefit on both sides from these technologies. As I mentioned in my opening remarks, as part of security, we are also trying to work together on transnational crimes, countering transnational crimes, drug smuggling, and counter-terrorism, cybercrime, and so on. Chile has very good capabilities. तो आप देख रहे थे चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिश फॉन्ट भारत की 5 दिवसीय राजकीय यात्रा पे हैं। आज पहला दिन था जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात के बाद प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई और उसके बाद कई विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग पर सहमति आगे बढ़ी है। विदेश मंत्रालय विस्तार से बता रहा था कि किस तरह से दोनों देशों के आपसी संबंधों को मजबूत करने की दिशा में कई क्षेत्रों में कई पहलुओं पर आज बातचीत हुई है। बढ़ते हैं आगे अन्य खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिश फॉन्ट की मौजूदगी में प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत भी हुई और इस दौरान आपसी हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर बातचीत हुई। भारत और चिली के बीच एंटार्क्टिका में सहयोग बढ़ाने, सांस्कृतिक आदान प्रदान, आपदा प्रबंधन, कॉपर माइनिंग को लेकर समझौते पर सहमति बनी। दोनों ही देश वैश्विक तनाव के बीच शांति और सहयोग को लेकर आशान्वित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देश क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में साझेदारी को बल देंगे। उन्होंने कहा कि लचीली आपूर्ति और मूल्य श्रृंखला को स्थापित करने के लिए काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा, रेलवे, अंतरिक्ष तथा अन्य क्षेत्रों में भारत अपना सकारात्मक अनुभव चिले के साथ साझा करने के लिए तैयार है। दोनों पक्षों के बीच लेटर ऑफ इंटेंट पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। यह खुशी का विषय है कि चिले के लोगों ने योग को स्वस्थ जीवन शैली के रूप में अपनाया है। चिले में 4 नवंबर को राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया जाना हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। हमने चिले में आयुर्वेद और ट्रेडिशनल मेडिसिन में भी सहयोग बढ़ाने पर विचार किया। रक्षा के क्षेत्र में बढ़ता सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास का प्रतीक है। हम इस क्षेत्र में एक दूसरे की जरूरतों के अनुसार डिफेंस, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन तैयार करने के लिए आगे बढ़ेंगे। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ड्रग ट्रैफिकिंग, टेररिज्म जैसी साझा चुनौतियों का सामना करने के लिए हम दोनों देशों की एजेंसी के बीच सहयोग बढ़ाएंगे। भारत और चिली के बीच पारस्परिक लाभकारी व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता संबंधों का महत्वपूर्ण पड़ाव है। चिली के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देश अपने पारस्परिक लाभों को मजबूत करने के लिए सहयोगात्मक तरीके से मिलकर काम करेंगे। With these important areas as very concrete areas, so we announce here that this is the main news today of this visit, that after a lot of conversation and a lot of work through our teams,
and after the visit of Mr. Modi, that we have reinitiated of, we are going to have a comprehensive economic partnership agreement and work together in a collaborative manner to strengthen our mutual benefit, which is going to be fundamental in a world which is evolving and talking about free trade. So this will be available with a flexibility for different sectors, which are going to, with the idea to be mutually beneficial for all the parts. और बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए डीटी न्यूज। लोकसभा में कल वक्फ संशोधन बिल पेश होगा। बिल दोपहर 12 बजे लोकसभा में पेश किया जाएगा। बिल पर 8 घंटे चर्चा होगी। जरूरत के मुताबिक समय बढ़ाया जा सकता है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में इस बिल को सदन में पेश करने का फैसला किया गया। इससे पहले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में विपक्षी दलों के सदस्यों ने भी हिस्सा लिया। विपक्षी दलों के सदस्यों ने आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष से जुड़े मुद्दों को लेकर गंभीर नहीं है। 2 अप्रैल को वक्फ अमेंडमेंट बिल को मैं टेबल करना चाहता हूं फॉर कंसिडरेशन एंड पासिंग, पारित होने के लिए। उसके बाद हमने 8 घंटे के लिए मान लिया गया है कि चर्चा 8 घंटे का होगा, और बढ़ाना चाहता है तो हाउस में स्पीकर सेंस लेकर के बढ़ा सकते हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार इस संशोधन बिल पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि जेपीसी में इस बिल पर व्यापक रूप से चर्चा हो चुकी है। हम तो चर्चा चाहते हैं और जेपीसी ने व्यापक रूप से इस बिल का स्क्रूटनाइज किया, चर्चा किया और पार्लियामेंट में फिर से टेबल किया रिपोर्ट को। फिर कैबिनेट ने इसको जांच करके अच्छा से इसमें जो प्रोविजंस है उसको देख करके फिर से आज हम बिल को लाने का बात कर रहे हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी को अपना मत रखने का अधिकार है और देश सुनना चाहता है कि किस पॉलिटिकल पार्टी वक्फ अमेंडमेंट बिल में क्या पोजीशन रखता है, ये सुनना चाहता है। इस बीच भाजपा ने सभी लोकसभा सांसदों को 2 अप्रैल को और राज्यसभा सांसदों को 3 अप्रैल को सदन में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है। लोकसभा में 2 अप्रैल को और राज्यसभा में 3 अप्रैल को वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाएगा। केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने की अपील की है। काउंसिल ने अपने बयान में मुनम्मम की घटना का जिक्र किया है। इस पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट कर लिखा कि केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल की अपील मुनम्मम के 600 परिवारों की दुर्दशा को उजागर करती है, जिनकी पैतृक संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया है। ये दर्शाता है कि वक्फ बोर्ड किस तरह नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। वक्फ संशोधन विधेयक हमारे लोकतंत्र के सच्चे धर्मनिरपेक्ष कामकाज को सुनिश्चित करेगा। उन्होंने आगे लिखा कि वक्फ संशोधन विधेयक राष्ट्र हित में है, मुसलमानों के हित में है। ये वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाएगा। वक्फ की जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले ही आज वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कैथोलिक बिशप काउंसिल ऑफ इंडिया के सभी राजनीतिक दलों से वक्फ अमेंडमेंट बिल का समर्थन करने की यह अपील इस बिल को मजबूती देती है। ये बिल केरल के मुनम्मम में चल रहे विवाद जैसी विसंगतियों को दूर करेगा। आइए हम सभी मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास के मंत्र को मजबूती दें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि देश के अर्थतंत्र को मजबूत करने में आरबीआई का उल्लेखनीय योगदान है। आरबीआई की 90वीं वर्षगांठ पर मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने आरबीआई की महत्वपूर्ण पहलों का जिक्र करते हुए कहा कि विकसित भारत 2047 का मिशन एक ऐसे वित्तीय इकोसिस्टम की मांग करता है जो सभी के लिए सुलभ हो। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में आरबीआई ने नाबार्ड, आईडीबीआई, नेशनल हाउसिंग बैंक जैसी संस्थाओं की स्थापना करके वित्तीय इकोसिस्टम को मजबूत किया है। इसने कृषि, लघु व्यवसाय और हाउसिंग सेक्टर को आवश्यक सहायता मिली है। The RBI has over the years strengthened the financial ecosystem by establishing key institutions such as the NABARD, IDBI,
CDB, and National Housing Bank. It has thus provided essential support for agriculture, small businesses, and housing. Initiatives like the Lead Bank scheme have laid the foundation for expanding banking reach, ensuring that economic growth is inclusive and widespread. भारत ने भूकंप प्रभावित म्यांमार को मानवीय सहायता भेजी है। C-130J हरक्यूलिस विमान ने आज मांडले सफलतापूर्वक लैंड किया है, जिससे अत्यंत आवश्यक मानवीय सहायता पहुंचाई गई है। विमान में 16 टन आवश्यक राहत सामग्री भेजी गई है, जिसमें वाटर प्यूरिफायर, पीने का पानी, दवाइयां, खाने के लिए तैयार भोजन, टेंट, जनरेटर और चिकित्सा आपूर्ति शामिल थी। ये मिशन मानवीय सहायता के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो जरूरतमंद लोगों को समय पर सहायता सुनिश्चित करता है। म्यांमार को ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत भारत ने इस मुसीबत के समय में सहयोग का हाथ बढ़ाते हुए राहत बचाव कार्य में मदद के साथ ही तमाम वो मदद पहुंचाई है जो इस समय म्यांमार के लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है, जिसमें शामिल है वाटर प्यूरिफायर, पीने का पानी, दवाइयाँ, तैयार भोजन। इन तमाम ज़रूरतों के साथ भारत की सहायता आज म्यांमार के मामले में पहुंची है। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और शरद को दीजिए अनुमति। नमस्कार। Thank you.